So hello everyone, today we are with Manit, a graduate from Purdue University, plus he is co-founder of UPS Study and a faculty member at Brown University. इन्होंने students के साथ बहुत time spend किया है and he understands the exams you need to take including IELTS, SAT and ACT. So we will be talking about the preparation guide up to date for 2024 and 2025 students who will be taking it now so that you can take the right way, right strategy and who should take SAT exam and कैसे आपको scholarship मिल सकती है. तो सबसे पहले तो यार एसएटी किनको देना चाहिए, फीस के बारे में बाद में. सो कैन यू टेल कि यार इन विच केस समवन शुड टेक एन एसएटी? So यार okay, even Ivy League universities, which are the top universities, and many other universities have made SATs optional in the last few years, and they will continue to be optional. Now SAT किसको देना चाहिए? That's a right question. अगर आपकी प्रोफाइल, I think सबको एक बार दे देना चाहिए, ठीक है ना? Prepare for it, don't go blind, just give it, okay? Now if you score well, good for you. अगर आपकी प्रोफाइल strong है then also it will help you. अगर आपकी प्रोफाइल strong नहीं है then it will definitely help you. But if you do not score well, ठीक है, then if your profile is really good, right, consider not sending your SAT scores to the university. Let them judge you on the basis of your 12th grade scores and everything. एंड अगर आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, एसएटी भी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा, फिर या तो कंट्री बदल दो या फिर एसएटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, राइट? या पर एट द सेम टाइम एसएटी उनके लिए इंपॉर्टेंट है अगर वो स्कूल्स उनको टारगेट कर रहे हैं विच हैव इट एटलीस्ट optional or they will at least look at it. For example, schools like Harvard doesn't even look at your score anymore. But Harvard पर guarantee तो है नहीं कि Harvard होगा. Harvard does look at scores very well. Even Brown, like Harvard, Brown, all the Ivy Leagues actually have a similar system of going through the applications, okay? We look at scores, we look at interviews and everything, but we look at the overall profile. We have professionals जो आपका डिटेल के अंदर ऐसे पिक पॉइंट करके देखते हैं. They are trying to understand your character, your what kind of person you are, and then they see what do you bring to the table. यार I know I have seen so many times हम स्टूडेंट्स को ऐसे स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पे उनका 12th में दे वर नॉट इवन नियर बाय टॉपर तो है ही नहीं, लाइक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी एक्सेप्ट हुए हैं बिकॉज उन्होंने ऐसे में अपने कैरेक्टर, अपने लाइफ के मिशन को इतने अच्छे से बताया है एज कम्पेयर टू a university or a school topper just boasting about their grades and everything, right? So you have to really work on your application. That is the main point, even more than your marks or your SAT. Absolutely. And as per the study by New York Times, अभी मैं उनका डेली पॉडकास्ट सुन रहा था जिनमें उन्होंने अच्छे से बताया that because of SAT being optional, दो चीज़ें हुई हैं. Number one, पहले माना जाता था कि because the rich students have better resources to prepare for SAT, उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं. So that's why because of SAT there was a partiality कि यार rich students make it easier to make it to good schools and poor students make it difficult. So that's why they were like it's okay to eliminate. And second चीज़ ये हुई, they realized that कि it is not making a difference because इससे ऐसा भी हो रहा है that students who were underprivileged and maybe their school grades were not good. Imagine करो किसी का school अच्छा नहीं है and they cannot perform, they cannot get good grades, and SAT was a way to uplift their score and make a balanced profile. So इस कारण they are trying to make it optional and recommended from next year according to LA Times and New York Times predictions कि universities are reconsidering it and may make it considerable score for you so you can actually consider it, and इससे आपकी profile uplift ही होगी. It will not be it will not be a negative score unless आपके 12th में 90% हैं, आपके पास अच्छा co-curricular है, in SAT आपके पास 1100 या 1200 आ रहा out of 1600, right? Then you want to reconsider giving it, but otherwise it will always be uplifting only. Absolutely. Now यार SAT किस केसेस में लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में भेजना चाहिए? So when you will register for SAT exam, there will be optional कि 4 schools you can send your scores to free for 4 universities so that you don't have to pay later $20 per university to send it. आप क्या recommend करोगे? I recommend do not do that. प्लीज़ अपने पैसे बचाने के चक्कर में कंजूसी वहाँ पे मत दिखाना, ठीक है? यूनिवर्सिटीज़ को स्कोर्स मत सेंड करना उस मोमेंट पे बिकॉज यू नेवर नो हाउ डिड यू परफॉर्म, राइट? कई बारी आई हैव गिवन SAT ट्वाइस, ओके? मैंने 2 बारी SAT दी है और पहली बारी क्या हुआ था, मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को भेज दिया बट पहली बारी में इतना प्रिपेयर्ड भी नहीं था, मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, मैंने भेज दिया. आई स्कोर्ड अपनी पहली बारी में 1390, ओके? नाउ दैट वाज नॉट अ गुड स्कोर और मैंने जिन यूनिवर्सिटीज़ को भेजा बैचलर्स के लिए वहाँ पे मैंने ख़राब कर दिया. बट लकीली मैंने नेक्स्ट टाइम जब दिया SAT
in my time, like it was a few years ago, but I scored 1520, 1530 out of 1600, which was comparatively a very good score, right? Now because of that, जिन यूनिवर्सिटीज़ को गया बाद में उनको भेजा, वो तो चलो इम्प्रूव हो ही गया, ठीक है, बट you don't know if you would want to give SAT again or not, right? Considering it's still optional आजकल के टाइम में, तो I'll say don't worry about कि फ्री में जा रहा है अभी, ठीक है, बाद में थोड़े से पैसे देने भेजने के लिए दे देना, but at least you will know कि किसको जाना चाहिए, किसको SAT स्कोर नहीं जाना चाहिए. Absolutely. Now, how to prepare and how to get scholarship. So, can you tell me the best sources for preparing SAT? Okay, so definitely get a very good teacher for it, okay, but you don't have to buy books, you don't have to pay for resources. आज की डेट में SAT के लिए बहुत ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज हैं, you will find online. UPS स्टडी की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे, I'll give the link to her note, उस पर आपको 41 लेसन्स, लाइक डिटेल लेसन्स विद क्विजेज एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस फॉर फ्री मिलेंगे, जहाँ पे आपको टिप्स दी गई हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड ओवर 1500, ठीक है, फ्रॉम प्रोफेसर्स हु हैव बीन टीचिंग दीज स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 20 years, so that curriculum has been made for that. It just includes tips, questions and everything. You should do that. Absolutely. In terms of exams, कॉलेज बोर्ड SAT जो प्रोवाइड करता है वो खुद फ्री एग्ज़ाम्स बांटता है प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको वो भी ऑनलाइन अपने आप कहीं पे मिल जाएंगे. डू दैट, वॉच वीडियोस, यू विल बी फाइन. And by the way, UPS study is funded by Brown University. आप कोई ऐसे randomly source से नहीं सीख रहे, free में है, and you can trust it for sure. And now talking about the scholarship, there is Buddy for Study scholarship in India. अगर आपकी income X amount से कम है, I think for last time I checked it was 8 lakh rupees से कम, आपको 90% off SAT exam में इंडिया में ऐसे मिल जाएंगे. So you can check that out, and this way you can take SAT in an affordable way and make sure कि अगर score अच्छी आ रही है तभी उसके बाद सेंड करना. इफ इट्स लाइक यू थिंक ये स्कोर अच्छे नहीं है, इट विल नॉट मेक योर डिफरेंस इन योर एप्लीकेशन, देन नो नीड टू सेंड इट. एंड एक्चुअली आप UPS स्टडी की वेबसाइट पे हम भी स्कॉलरशिप्स के साथ पार्टनर्ड हैं. वी हैव अ लिस्ट कि आपको वी हैव अराउंड 370 यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग सम Ivy Leagues कि आपको हर यूनिवर्सिटी में कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है. सो यू कैन वॉच दैट एज वेल व्हाइल अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज़. Absolutely. Now SAT में यार दो ऑप्शंस आती हैं, with essay, without essay. First of all, you will recommend कि हर एक के लिए with essay because good schools obviously want essay. हर एक के लिए with essay, please take the essay. Without essay मत करना. I went to a US high school in Chicago area, तो हमको तो we were a very well funded school, तो and हमको तो बहुत recommended था कि if you want to get into Ivies or any good university, write with essay SAT, ठीक है. विद ऐसे के अंदर एक नॉर्मल टिप ये है, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड, यू हैव टू क्विकली थिंक, ठीक है. आपको टॉपिक पढ़ के जो भी आपके वर्ड्स मन में आ रहे हैं इन रिगार्ड्स टू द टॉपिक, जस्ट राइट दोज वर्ड्स एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग, ओके. यू ऑब्वियसली हैव टू प्रैक्टिस एसेज, आप स्कोर प्रैक्टिस करोगे, अपने आप को स्कोर करोगे, बट माई रिकमेंडेशन इज राइट एज मच एज यू कैन. आई थिंक आई ओनली गॉट 1 point off in my essay, and one of the tips I can give is मैंने 2 पेज भर दिए थे, लाइक 2-2.5 पेज भर दिए थे. आई स्टिल रिमेंबर, हाथ लाल हो गया था बिकॉज यू हैव सच लेस टाइम, बट यू हैव टू जस्ट राइट एज लॉन्ग एज इट इज़ मेकिंग सेंस. एंड ग्रामेटिकली के लिए दे आर ओके विद इट बिकॉज दे नो यू आर हैंड राइटिंग इट, यू वॉन्ट यू कैन नॉट लाइक राइट अ ड्राफ्ट एंड फिक्स इट, सो दे आर लीनियंट विद इट, बट राइट गुड थॉट्स as long as it is making sense. And examples ज़्यादा दो तो better होता है. मैं देखता हूँ कि यार whenever I was looking at essays with 12 marks out of 12, 10 out of 12, 8 out of 12, I always saw there is a difference in quantity and difference in valid examples. Yeah. तो ये चीज़ें definitely matter करती हैं. So just think about few examples and points you want to talk about. Introduction, relevance, 3 examples, conclusion. बस ये 4 पॉइंट्स लिखते जाओ. Yeah, that's for essays. अगर आपने बाय चांस SAT नॉन essay दे दिया है, you might see कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में while you are applying they will not let you submit the application जब तक आप SAT with essay ना करो. So I will again recommend कि पहले आप यूनिवर्सिटी लिस्ट प्रिपेयर कर लो. अगर आपको पता है कि इसमें मेरे को SAT देना ही पड़ेगा, वो भी with essay, तभी आप दो. अगर आप की सारी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ आर TLB and they all have optional essay and all, or they have optional SAT, then you might want to consider it, right, that way. Absolutely. Now next about IELTS, TOEFL and Duolingo English test. Now you have to take another Duolingo English test या फिर
IELTS या TOEFL, whatever, depending on which university you want to go. अगर वो DET, IELTS, TOEFL they accept it. Depending on that, you can take either of three. अगर तीनों accepted है तो जहाँ भी आप apply कर रहे हो तो आप तीनों में से कुछ भी दे सकते हो. Obviously cheaper option is DET. So yeah, cheaper is definitely Duolingo. However, there are 3,000 universities in US. 3,000 is a very big number, right? And colleges की तो मैं बात भी नहीं कर रहा. Universities 3,000 है. Majority TOEFL होता है, फिर IELTS है, फिर Duolingo है. Correct. ठीक है. अच्छा, अगर for some students, if you're applying to Canada as well, like कुछ students क्या करते हैं जो हम बोलते हैं US and Canada दोनों जगह apply करेंगे, then consider giving just IELTS, okay? Because for Canada आपको वीज़ा के लिए IELTS सबमिट करना पड़ेगा. For US द वीज़ा के लिए मैटर नहीं करता कि आपने Duolingo दी है, IELTS दी है, TOEFL दी है. So you need to consider that way as well. But Duolingo again is accepted by the major Ivy Leagues. It's a lot more cheaper. You can give it from home and get a result in a day. That is one of the good options. But if you're applying to multiple countries, you might want to consider other exams. Absolutely. Now, talking about IELTS and TOEFL, what advice will you have for students? How to prepare and how to get close to 100 plus marks? Because 100 plus देखा जाए, काफ़ी universities 100 plus को अच्छा मानती हैं. Yeah. And it doesn't affect your acceptance rate. It's just visa के लिए होता है कि 80. Exactly. 80. जैसे Georgia Tech के लिए मैंने देखा था 79 से ऊपर आने चाहिए out of For TOEFL. For TOEFL. और Georgia State के लिए भी 80 प्लस थे. तो मैं तो भाई एवरेज स्टूडेंट था इंग्लिश में, मेरे 81 आए थे, 80 आए थे. Exactly. तो लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं. I mean, English exams is like a check कि as long as आप एक लिमिट के ऊपर हो, अगर आपने TOEFL में 80 के ऊपर हो या अगर आप IELTS में 6 बैंड के ऊपर हो, तो इट्स अ चेक कि हाँ आपको उसके एक्सेप्ट कर ही लेंगे. हैविंग मोर वोंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस. बट दिस इज वेयर द मेन क्वेश्चन कम्स, राइट? इफ यू आर लुकिंग टू अप्लाई टू मल्टीपल कंट्रीज, US और कैनेडा, राइट, देयर इज TOEFL, Duolingo, IELTS. अगर आप मल्टीपल कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हो, देन आई विल रिकमेंड टू गो विद IELTS, ओके? बिकॉज अनलाइक US, IELTS में आपको वीज़ा के लिए मतलब कनाडा में आपको वीज़ा के लिए IELTS एग्जाम सबमिट करना पड़ेगा. एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट TOEFL एज एन एग्जाम एज ऑफ नाउ, एंड दे डोंट इवन एक्सेप्ट Duolingo फॉर वीज़ा पर्पसेस. डिपेंड्स ऑन केसेस, राइट? क्योंकि कुछ केसेस में देयर इज ओनली हैंडफुल ऑफ यूनिवर्सिटीज लाइक UBC वैंकूवर जो TOEFL से गुजारा कर लेती है. यूनिवर्सिटी माइट एक्सेप्ट इट, बट फॉर वीज़ा द वीज़ा ऑफिसर वोंट एक्सेप्ट इट. So in US we do a visa interview. In Canada we prepare a written application and you submit it to the embassy. They review it. If you have less than 6 bands for IELTS, for example, right, they can reject your visa. They will actually reject your visa because it's a requirement to have a certain number of IELTS by the government. So that's where it's a big difference. If you're just applying for US universities, तो आप TOEFL दो, Duolingo दो, IELTS दो, जब तक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है, that is all what matters. The visa officer won't care that much. True. But for Canada, UK, they do care. You have to show it to the government as well. So you have to see कि कौन से exams are accepted by both the university, unless you are giving two. ये ना हो कि आपने Duolingo दे दिया, यूनिवर्सिटी ने acceptance letter दे दिया, but बाद में visa officer ने नहीं माना, right? So आपको visa rejection मिल जाएगा. So you have to plan for all of these things. Absolutely right. I'll also add one more thing. If you're looking for IELTS के free resources, just like SAT, हमारी वेबसाइट पे IELTS के free resources भी हैं. It will give you tips, example questions. On top of it, if you want IELTS का free material, books and assignments, and IELTS के लिए free lectures. So we hold first come first serve lectures for free. It's completely free. You don't have to pay anything. With India के top IELTS teacher, you can just go to our website, register for it. You will get an email with the Zoom link and schedule in a week, and you can just join the classes on Zoom link. The teacher will answer questions. They can provide you with homework, right? It'll help you prepare for IELTS better. Absolutely. अब speaking test करने के लिए तो आपके पास ChatGPT है. You can use ChatGPT to talk to it, and it replies you like you are conducting an IELTS exam. Like I was really impressed. तो अगर आपको free में speaking भी test करनी है, writing भी करनी है, you have ChatGPT. Exactly. There are many resources. ये test के लिए आपको pay करने की कहीं ज़रूरत नहीं है. If someone is saying to pay you, I mean, unless and until उनके पास वो all of their students are going to Harvard and all कि वो बहुत ही unique हैं, जो बहुत rare होता है, right? Then it makes sense कि आपको you might be inclined to pay it. Otherwise, never pay for it. Majority students, when we do a survey कि who paid for SAT, who paid for ACT in Ivy League universities, even Stanford and all, 95% students never paid anyone. They did it by themselves. So you might want to consider that.
Absolutely. So thank you so much, Manit. Thank Again, you. it was pleasure talking to you, and I hope you use these advice for your IELTS and TOEFL exams and your SAT exam. Thank you so much. Thank you. Oh, I just wanna be your Superman. Come fly with me, just take my